Hello students. So today I am again back to deal with new topic from wave chapter. Okay. Previously in wave chapter we have discussed what is wave, what are transverse wave, what are progressive waves, equations of frequencies in open pipe, closed pipe and stretched strings. These we have completed already. So after that this is the new topic and little bit difficult topic. It is little bit complicated topic, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, but if we go slowly, if we understand step by step, the topic is very easy. After completion of this topic, I am going to give you some mathematical problems, because based upon this topic you may get mathematical problems of intermediate as well as of NEET and MCET and IIT etc. So in previous class what we have completed that in waves, whenever waves are formed, whether it is transverse wave, whether it is longitudinal waves or any other wave, whenever waves are created in any medium, energy will travel. What it means? Energy will cover the distance. Remember this thing. So here in today's topic I am giving very much important short tips that you have to remember. Otherwise you cannot understand further topic. Who will cover the distance? Energy will cover the distance. Remember. Means whenever we draw this kind of diagrams of any wave, whether it is longitudinal wave, transverse wave, जब कभी भी डायग्राम उतारते हैं वो डायग्राम आगे जाता हुआ दिखता है, वो डायग्राम में पार्टिकल्स आगे जाते हुए दिखते हैं, बट पार्टिकल्स विल नॉट मूव, पार्टिकल्स आगे कभी भी नहीं जाते, एनर्जी आगे जाती है, एनर्जी विल ट्रांसफर, एनर्जी विल कवर द डिस्टेंस, दैट यू कीप इन योर माइंड. So this we have completed. Second point also we have discussed, what is that? Particles will vibrate about that mean position. Energy will cover distance, horizontal distance will be covered by energy of the wave. What the particle will do? Particle will not be stationary. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एनर्जी ही मोशन में है, एनर्जी ही मूवमेंट में है, पार्टिकल रेस्ट में. नो, पार्टिकल विल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, either back and forth or to and fro. So particles will be in motion, but always about their mean position. Mean position के ये साइड में, mean position की ये साइड में, mean position के ऊपर के साइड में, mean position के नीचे के साइड में. So particle will be motion, but about their mean position, that you have to remember. So these two things we have discussed already. So based upon these two things, today's general equation is related. ये दो चीजों के ऊपर general equation depend करता है. So before going to general equation, we have to understand how this diagram people will draw. ये diagram हमेशा wave का ऐसा क्यों draw करते हैं? Okay, maximum in all topics we use diagram for wave like this only. ये wave का diagram आया कैसे? It is from mathematics. आप सबको mathematical graph उतारना आता है. All you know how to draw mathematical graph. Suppose I have given to draw a graph we require x and y values. एक x axis होता है, एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है. ये x और y के वैल्यूज लेके अपन कोई भी ग्राफ ड्रा करते हैं. तो मैं यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लिया. I have taken a simple example. Suppose I have given you time and y values, because I want to draw a graph by taking time on x axis, by taking y on displacement of particle on y axis. So I will give values of time, values of y axis values. These two values which I have given like this. So what is the first value? Time t1 and y1. What I have given? Time value is 1 and y value is 0.5. So suppose this is 0, 0. This is 0.5. This is 1, and then so on we get 1.5. Then do so on like that. And here time values I am taking as 1, 2, 3, 4, so on. So for first points, for first coordinates t1, y1 equal to 1, 0.5, where you will fix the point? You will take t value, this one, and then y value is 0.5. Matching these two, coinciding these two, you will draw one point. Then second coordinates, t2 value is 2 and y2 value is 1. So t2 values, time value is 2. You are not standing here only. You are not at rest.
टाइम आगे बढ़ गया तो आप भी आगे बढ़ जाना। वेव कैसा आता वो बता रहा हूं मैं आपको। ओके, आप भी आगे बढ़ गए, अब आपका पोजीशन यहां पर है। ओके, नाउ एट टाइम 2 seconds व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल गिवन? इट इज गिवन एज 1। तो आप ये 2 और ये 1 के पास से डॉटेड लाइंस उतार के जहां पर इनको कोइंसाइड होते वहां पर एक पॉइंट आप उतार। इज इट और नॉट? देन थर्ड कोऑर्डिनेट टाइम t3 एंड y3 3 एंड 0। टाइम कहां पर था? 3 seconds। अब आप यहां पर हैं, पार्टिकल को देख रहे हैं, पार्टिकल कहां पर है? y2 वैल्यू, y3 वैल्यू इज 0। अगेन द पार्टिकल, मतलब ये टाइम के ऊपर 3 सेकंड के ऊपर पार्टिकल कहां पर आ गया? y का वैल्यू 0, तो पार्टिकल यहां पर है। ओके, फिर टाइम t4 इज इक्वल टू 4 एंड y4 इज इक्वल टू -1, मतलब 4 सेकंड के ऊपर पार्टिकल जो था -1 पे था, -1 नीचे रहता। सो यू विल point the point, you will fix the point like this. So in this way if you join the points you will get this kind of wave. एक तो मैथमेटिकल वे में ऐसा हो गया, वेव का डायग्राम ऐसा आता है by using the x axis values and y axis values. Now from mathematics also we can get this kind of graph. You all know from maths at your school level you have already studied that sine values will be between -1 to +1. साइनोसॉइडल वेव बोल के आपको आता, साइनोसॉइडल वेव। तो साइन के रेंज वैल्यूज कहां से कहां तक रहते हैं? -1 to +1। ओके, तो y is equal to sin theta. By using this equation you will get sine wave. How that wave will be? To get the wave of sine I am substituting the values of angles. You know very well sine 0 degree will be equal to 0. Sine 90 degrees will be equal to 1. Sine 180 degree is equal to again 0. You can check from mathematics, sine 180 degree is equal to 0. Then sine 270 degree is equal to -1. You can check 0, 1, 0, -1. Last but not the least, sine 360 degree will be equal to again 0. ये वैल्यूज है आपको मैथमेटिक्स में आपको मिलेंगी। You can check sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, sin 90 डिग्री वैल्यू 1, sin 180 डिग्री वैल्यू 0, sin 270 डिग्री वैल्यू -1, sin 360 degree value 0. So all values of sine will be in between -1 and 1. So that's why I have written sine values will be between -1 and 1. So by using these values, angle values of sine, let us draw the displacement values and let us get the graph. So how the graph will be? Let us see. So I have taken theta and displacement y. So at 0, 0 particle will be here. Okay. Now at sine 0 degree. So I have taken theta value here 0 degree. Where the particle is, the y value you will get when you substitute theta is equal to 0 degree. What y value you will get? You will get it as 0. So where you will start? Where you will fix the point? Here. Now let us substitute sine 90 degree. So at sine 90 degree, what y value you will get? Sine 90 degree is equal to 1. So y value that is positive 1. So somewhere you will take here, that is +1. So next point is here. Suppose here you will get 90 degree. So at this 90 degree, you are getting maximum value. So this is your 90 degree and +1 value. Okay, y value is +1. At which angle? 90 degree. Now let us go to 180 degree. Sine 180 degree. 0, 90. Here I will take 180 degree. Okay. At 180 degree, what is y value? You can substitute here. Sine 180 degree. Sine 180 degree is equal to again y value is coming out as 0. For sine 180 degree, y value is coming out as 0. So where the point will come? Again the point will come here. Then sine 270 degree -1. So
here is the minus 1, you will take this side for sine 270 degree. Okay, then for sine 360 degree, for example here the 360 degrees. Okay, the point will come here because at 360 degree sine 360 degree is equal to 0, so y value will come out as 0. So the point will be at this side. Join all the points, so we'll get this kind of wave. So this wave is called as sinusoidal wave. From which equation we got this one? We got this wave from equation y is equal to sin theta. Y is equal to sin theta. So this y is equal to sin theta equation we can use for wave patterns. For wave patterns we can use equation y is equal to sin theta form. Is it clear everyone? Now similarly after this please take down. Okay. Now, hope you have understood the meaning of this wave. At different angles, we are getting wave pattern like this. Okay. Where on y-axis we are taking displacement of particle. What does this y represents? Remember, y represents displacement of particle. Displacement of particle. Upward, downward. Upward, downward. Particle is not moving forward. Energy of the wave is moving forward. Remember, energy of the wave is moving forward. Energy of the wave is covering the distance. But what the particle is doing? Particle is moving in upward direction. Particle is moving in downward direction. Always passing from mean position. That you have to keep in your mind. So that's why we get this kind of wave. Okay. Now in this wave we got by equation y is equal to sin theta. Y is equal to sin theta. We are, remember always what we are doing? We are deriving the general equation of wave. हम क्या कर रहे हैं? ये सारे एक्सप्लेनेशन से जनरल इक्वेशन ऑफ वेव अपन डिराइव कर रहे हैं. तो अभी तक अपन कहां तक पहुंचे? ये वेव आता बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. ओके, बाय यूजिंग ग्राफ आल्सो आई हैव प्रूव्ड, बाय यूजिंग मैथमेटिकल साइनसॉइडल वेव आई हैव प्रूव्ड लाइक दिस. ओके, नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट ईयर सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर, ऑसिलेशन चैप्टर. यू नो, whenever a particle moves back and forth in this wave, like as particles are moving upward and downward motion, where its acceleration is directly proportional to displacement but opposite in direction, we say the particle is in SHM, oscillatory motion, means it is in oscillation. So here also particle, how the particle is moving in all waves, whether it is longitudinal waves, whether it is transverse wave, particles will be in SHM. So particle whose value we are denoting with y, we are saying the particle motion is in SHM. So displacement of particle we can write it as y is equal to a sin theta, which we can change it as y is equal to a sin omega t, because omega is equal to theta by t, which we have already studied in first year. Angular velocity is equal to angular displacement by time. So taking this t this side, you will get theta is equal to omega t. Now let us see whether this equation we can use for wave pattern. This equation can be used for wave pattern. What is this equation representing? It is representing displacement of particle. Displacement of particle. Whether this displacement of particle is creating wave
pattern or not? Let us see. Then if it is creating, then we can say this is the general equation for wave. Now what is A? You know, A is amplitude. A is amplitude. What do you mean by amplitude? Maximum displacement from mean position. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. यहां पर मीन पोजीशन है, बॉडी रेस्ट में था, डिस्टरबेंस की वजह से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, डिस्टरबेंस की वजह से, और उसी डिस्टरबेंस की वजह से ही वेव्स क्रिएट होती है. सो एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम ऊपर की जानिब, ऊपर की तरफ जितना पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा, इट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. और ये वेव्स के अंदर अभी आप देखिए, आप पार्टिकल ऊपर की तरफ भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट +1 कवर कर रहा है, नीचे के डायरेक्शन में भी -1 कवर कर रहा है. सो इंस्टेड ऑफ दिस +1 एंड -1 वी कैन राइट +a एंड -a, as a is what? Displacement only, and on y axis we are taking displacement of particle. y axis पे क्या ले रहे हैं अपन? डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ना पार्टिकल का. ऊपर नीचे जो पार्टिकल हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर. मैक्सिमम नंबर ऊपर कितना ले सकते हैं? साइन वेव से अभी जो सीखे +1 ले सकते हैं. मिनिमम नंबर नीचे कितना ले सकते हैं? -1, बिकॉज दिस इज साइनोसॉइडल वेव, और साइनोसॉइडल वेव के मैक्सिमम वैल्यूज +1 और -1 के बीच में रहते हैं. तो +1 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, -1 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को अपन किससे डिनोट कर सकते हैं? एम्पलीट्यूड से डिनोट कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर +a एंड -a. नाउ लेट अस सी आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द टाइम वैल्यूज. अब ये इक्वेशन अपने को जनरल इक्वेशन ऑफ वेव बनेगा या नहीं बनेगा ये देखेंगे अपन. उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? ये ओमेगा टी को चेक करना पड़ेगा. अगर ओमेगा टी के सारे वैल्यूज के लिए अपने को ऐसा वेव आ रहा है, देन वी कैन से दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर वेव. तो अपन y = a sin ओमेगा t के लिए भी ग्राफ उतारेंगे, वेव उतारेंगे और देखेंगे वो कैसा है. You know omega is equal to theta by t. Taking this t this side, you will get omega t is equal to theta. Also this omega formula you know. Omega is equal to 2 pi by capital T. So here I am doing one change. Y is equal to a sin 2 pi by t into small t. Okay, into small t, where t is time. Now I will draw one graph by taking time on. I will draw one graph by taking time on x-axis. By taking time on x-axis and displacement on